गुड इवनिंग। आज मैं जीरा इंस्टॉल करके उसको हम डिप्लॉय भी करेंगे सर्वर पर। यहाँ पर मेरे पास एक डॉकर कंपोज फाइल है, इसको मैं सर्वर पर रन करूंगा। सबसे पहले वीएस कोड एडिटर हम लॉन्च करेंगे। और इसके अंदर मैंने प्रीवियस क्लास में आपको बताया था कि हम एक्सटेंशन यूज करेंगे रिमोट होस्ट। ये वाला एक्सटेंशन मैंने आपको बताया था, रिमोट होस्ट बाय माइक्रोसॉफ्ट। रिमोट एसएसएच वाला एक्सटेंशन आपको इंस्टॉल करना है एंड इट इज प्रोवाइडेड बाय माइक्रोसॉफ्ट। ये आपने इंस्टॉल किया, प्रीवियस क्लास में मैंने ये इंस्टॉल किया था। अब यहाँ से मैं सबसे पहले तो रिमोट मशीन को कनेक्ट करूंगा। यहाँ से इस बटन पर हम क्लिक करेंगे और ये मुझे कनेक्ट करके यहाँ पर बता देगा। ये सारी डिटेल्स आ रही है कनेक्ट होने की। यहाँ पर ये एक बार पासवर्ड पूछेगा, तो आपको पासवर्ड डालने हैं सर्वर के और इंटर करना है। अब पूरा के पूरा सर्वर को आप ऑपरेट लोकल वीएस कोड एडिटर से आप कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए ये बेसिकली है। और मैं यहाँ टर्मिनल पे चले जाता हूँ। सो यहाँ पर स्लैश रूट लेवल के सारी डायरेक्टरीज आ रही है। मैं आज यहाँ पर एक डायरेक्टरी क्रिएट कर लेता हूँ। तो सारा काम मैं टर्मिनल से ही करूँ। यहाँ से अगर हम पीडब्ल्यूडी देखेंगे, पीडब्ल्यूडी किया मैंने, तो मैं अभी रूट पर एस डैश एल किया। ये सारी डायरेक्टरी मुझे यहाँ लोकली दिखाई दे रही है। आज की डायरेक्टरी का मैं एम के डी आई आर डैश पी एंड अनिल 28 सितंबर 24 का मैं फोल्डर बनाता हूँ, अनिल 28 सितंबर। और यहाँ पर हमने ये बनाया फोल्डर। इसके अंदर यहाँ पर यहाँ से हम उसको रिकनेक्ट कर सकते हैं, या फिर आ, इसको मैं यहाँ से अगर हम इसको कोड डॉट कर लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। कोड डॉट करते ही वो पर्टिकुलर फोल्डर हमारा ओपन हो गया। अब मुझे प्रीवियस वाले टर्मिनल की मुझे जरूरत नहीं है। वीएस कोड एडिटर को बंद करूंगा। यहाँ पर मुझे एक बार और पासवर्ड डालना होगा, ओके लैब्स @ यहाँ पर ये हो गया है और टर्मिनल पर हम गए और डॉकर पी एस डैश ए किया मैंने। और पहले से हमारे रनिंग कंटेनर हैं। मैं सारे कंटेनर्स को बंद कर लेता हूँ। डॉकर आर एम फोर्सफुली एंड देन डॉलर docker ps dash a for all container and queue for the quiet mode, which print all the IDs of the container. Now you can see there is no container running. We can also clean up the system. Now every file is removed. Now let's create a new file with the help of maybe vim or touch docker-compose.yaml. We will create this file, and once we create the file, you can see the file in the Explorer tab. Now
in the PPT section, I have provided the Docker Compose sample file. I'll just copy it and paste it. So basically, it is composed of three services. One service is Jira Software Services, Jira Service, Postgres SQL, and PG Admin. So PG Admin is basically a GUI interface for the Postgres SQL. Just like for the MySQL, we have PHP MyAdmin, and here in the case of Postgres, we have PG Admin. So all the tables and database will be stored in the Postgres, and if you want to visualize and want to see graphically which interface we have to use is PG Admin. सो यहाँ पर ये मैंने पीजी एडमिन का इंटरफेस लिया और यहाँ पर हम देख लेते हैं कोई वॉल्यूम माउंटिंग तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और यहाँ पर ये डेटाबेस के हमने पासवर्ड दे रखे हैं। यहाँ पर हमने जीरा फोल्डर ऑटोमेटिकली यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा क्योंकि कॉलन के लेफ्ट हैंड साइड वाला होस्ट पोर्ट होता है। ये जीरा फोल्डर ऑटोमेटिकली यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा जैसे ही मैं डॉकर कंपोज अप करूंगा। सो पीजी एडमिन एंड पोस्टग्रेस का डेटाबेस हम लोकली यहाँ पर स्टोर करेंगे और देखते हैं, इसको रन करके देखते हैं। डॉकर कंपोज अप डैश डी और सारी इमेजेस मेरी पुल होके आएंगी। ये जैसे ही आप हो रहा है, मैं आपको आज एक नई रिपोजिटरी भी बता रहा हूँ। जीरा वर्किंग नाम से मैंने बनाई हुई है। इस जीरा वर्किंग डायरेक्टरी में मैंने oklabs.जार फाइल मैंने बना रखी है। ये जार फाइल आपको डाउनलोड करनी है। ये मैंने डाउनलोड किया इस जार फाइल को और इसको एससीपी कमांड के थ्रू हम सर्वर पर भेजेंगे। ठीक है ना, एससीपी कमांड के थ्रू हम इसको सर्वर पर भेजेंगे। ये जार फाइल मैंने यहाँ पर डाउनलोड कर रखी है। ठीक है, सो जिया वर्किंग वाली फाइल मैंने लिया एंड इसको मैं एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ यहाँ से डेस्कटॉप पे। सो मैं यहाँ से एक्सट्रैक्ट हियर किया मैंने। जैसे ही एक्सट्रैक्ट हियर करूंगा, जीरा वर्किंग का एक फोल्डर बना और उसमें oklabs.जार फाइल है। ये जार फाइल को मैं वहां पर अपलोड करूंगा। मीनवाइल यहाँ पर हम देखेंगे ये प्रोसेस चल रही है। अब इसको मैं एससीपी के थ्रू अपलोड करूंगा। सो यहाँ पर एससीपी oklabs रूट एट द रेट सर्वर का आईपी डैश पी जो है सर्वर का पोर्ट जो है डैश कैपिटल पी इज एन ऑप्शनल। इफ यू राइट देन यू हैव टू राइट 22। इफ यू डोंट राइट इट इज ओके, you can skip the port number part. By default scp will try to send the file on the port number 22 of the secure copy protocol. So यहाँ पर हम सर्वर का आईपी ले लेते हैं। सर्वर का आईपी क्या है? सर्वर का आईपी मैंने कॉपी किया। सर्वर का आईपी में यहाँ टर्मिनल से मैंने कॉपी किया, कोलन लगाया और उसके बाद मैं यहाँ से चेक करूंगा मेरा पीडब्ल्यूडी वीएस कोड एडिटर से ही यहाँ से पीडब्ल्यूडी आप कर लीजिए तो आपको पूरा एड्रेस पता चल जाएगा कि आपको जार फाइल कहाँ भेजनी है। सो फॉर एग्जांपल मैंने जार फाइल यहाँ भेजी। जैसे ही मैंने इंटर किया तो ये पासवर्ड पूछ रहा है। यहाँ से मैंने पासवर्ड इंटर किया और मेरी अपलोडिंग हो गई। अब यहाँ से मैं ls-l करूँ तो देखिए oklabs.जार फाइल आ चुकी है। ठीक है ना, oklabs.जार फाइल हमारे इस पे आ चुकी है। अब हमें क्या करना है, मेक श्योर अभी हम सबसे पहले हमारे कंटेनर चेक कर लेते हैं। ये देखिए हमारे कंटेनर अप एंड रनिंग है और हमारा कंटेनर जो है जीरा का कंटेनर हमारा चल रहा है 10,000 पर। सो यहाँ से मैं होस्ट नेम डैश कैपिटल आई किया मैंने। यहाँ पर हम गए, कॉपी किया, यहाँ पर हम गए कोलन और किस पोर्ट पे चल रहा है, इज ऑन द 10,000 पोर्ट। आई एम रनिंग माई जीरा एप्लीकेशन। सो यहाँ पर ये जीरा एप्लीकेशन मेरा इंस्टॉल हो गया है। अब हम यहाँ से इन्वेस्टिगेट करेंगे कि बेसिकली हमने आईडी पासवर्ड क्या दिए थे। आईडी पासवर्ड यहाँ पर दिए हुए हैं, ये आप इसके थ्रू आपको कनेक्ट करना है। तो यहाँ से हमने पोस्टग्रेस यूज कर रखा है इस बार। होस्ट नेम में आप डेटाबेस का जो होस्ट नेम है वो आप यूज कर सकते हैं। डेटाबेस हमारा
यहाँ पर हमने पोस्टग्रेस एसक्यूएल यूज करना है, मे बी मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। सो अदरवाइज हमें दिक्कत आएगी लास्ट क्लास में, जो है हमें होस्ट नेम, सर्वर का आईपी हम दे सकते हैं, लोकल होस्ट भी दे सकते हैं। एक बार ट्राई करके देखते हैं, पोस्टग्रेस एसक्यूएल सर्विस का नेम लेके देखते हैं और टेस्ट कनेक्शन पे क्लिक करेंगे। सो मैंने डाटाबेस की सर्विस का नाम दिया। डाटाबेस क्या है मेरा? डेटाबेस मैंने यहाँ से मेंशन कर रखा है जीरा डीबी। सो ये जीरा डीबी हो गया। यूजर नेम आपने सोहेब लिख रखा है, तो बेसिकली सोहेब आप लिख सकते हैं, या फिर इसको कंटेनर को चलाने से पहले यहाँ पर आप चेंज भी कर सकते हो। ठीक है ना? मेरा पासवर्ड 123456 है और मैं सबसे पहले टेस्ट कनेक्शन पे क्लिक करूंगा, तो मेरा डेटाबेस कनेक्शन टेस्ट वाज सक्सेसफुल। इसका मतलब जीरा किसके साथ कम्युनिकेट कर पा रहा है? पोस्टग्रेस डेटा के साथ कम्युनिकेट कर पा रहा है। जीरा अपनी डाटाबेस की टेबलें और सारे रिकॉर्ड्स कहाँ इंसर्ट कर सकता है? अब पोस्टग्रेस एसक्यूएल में इंसर्ट कर सकता है। अब यहाँ पर मुझे क्या करना है? नेक्स्ट पे मैं क्लिक करूंगा। यहाँ जैसे ही मैं नेक्स्ट क्लिक करूंगा तो अब जीरा की इंस्टॉलेशन प्रोसेस मेरी आगे बढ़ेगी। इसको देखते हैं। अब यहाँ पर आ जाते हैं। टर्मिनल मैंने ओपन किया। सबसे पहले मुझे अपनी मशीन में जावा इंस्टॉल करना पड़ेगा। सो मैं यहाँ पर जावा डैश डैश, ध्यान रखना कोई भी सॉफ्टवेयर में इंस्टॉल कर रहा हूं तो आपको पूछना है कि सर आप अपना सॉफ्टवेयर जो है, जो भी आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने जा रहे हो, वो कंटेनर के अंदर इंस्टॉल कर रहे हो कि होस्ट मशीन में? दो ही चीजें हैं यहाँ पर। या तो आप कंटेनर के अंदर काम करोगे या कंटेनर के बाहर। अगर कंटेनर के बाहर काम कर रहे हैं, इसका मतलब होस्ट, और कंटेनर के अंदर काम कर रहे हैं मतलब आप कंटेनर के अंदर काम कर रहे हैं। तो बेसिकली अभी आप बताइए, मैं कंटेनर के अंदर हूं कि बाहर हूं? आ, उसका मैं ट्रिक भी बता रहा हूं। अगर होस्ट नेम डैश आई करते ही अगर सर्वर का आईपी दिख जाए, रियल सर्वर का आईपी, इसका मतलब आप होस्ट पे काम कर रहे हो। अब मान लीजिए मैं किसी कंटेनर के अंदर हूं, तो कंटेनर के अंदर जाने का क्या तरीका है? डॉकर कंटेनर एग्जैक डैश आईटी, और किसी भी एक कंटेनर में जीरा कंटेनर को ले लेता हूं, अंदर गया और यहाँ पर मैंने बैश लिखा। अब देखना मेरा ये टर्मिनल रूट एट द रेट, पहले वीएमआई आ रहा था, अब एफएससी आ रहा है। इसका मतलब ये जब भी होस्ट नेम चेंज हो जाएगा आपको ये पता करना है। अब यहाँ से मैं अगर होस्ट नेम डैश आई करूँ तो मैं, मेरे पब्लिक आईपी नहीं, मेरे मुझे अपनी सर्वर की आईपी नहीं दिखाई देगी, कुछ 172 समथिंग डॉट दिखाई देगी। अगर ये 172 समथिंग कुछ दिख रहा है, इसका मतलब आप कंटेनर के अंदर हो। और कई बार आप होस्ट से भी पता कर सकते हो, यू आर इनसाइड एक्चुअली in the container. So I want to exit from the container and I will install जावा सॉफ्टवेयर, बिकॉज ये जीरा सॉफ्टवेयर पूरा जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बना हुआ है। ठीक है ना? जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बना हुआ है। तो जीरा जो सॉफ्टवेयर है वो किस में बना हुआ है? जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बना हुआ है। तो इसकी प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए आपको कहीं ना कहीं क्या करना होगा? जावा सॉफ्टवेयर अपनी मशीन में इंस्टॉल करना पड़ेगा। सो लेट्स इंस्टॉल जावा, जावा उबंटू। और मैं यहाँ से डिजिटल ओशन का भी रेफरेंस ले सकता हूँ, चैट से मैं पूछ सकता हूँ मुझे कुल मिला के क्या इंस्टॉल करना है। जावा इंस्टॉल करना है इसके अंदर, उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। ये जो मेरे पास सर्वर मैंने आपको दे रखा है, ये कौन से वर्जन का है? तो आप ये पता कर सकते हो etc/os-release कमांड से। तो जैसे ही आप कैट करोगे etc/os रिलीज से, आपको पता चल जाएगा आप उबंटू के किस वर्जन पे काम कर रहे हो, 22.04। तो वो के वही ट्यूटोरियल मेरे पास यहाँ पर इंटरनेट पर डिजिटल ओशन वालों का है, या आप कहीं पे भी जाओ, चैट से पूछो, गूगल से पूछो, कहीं पे भी जाओ। मकसद क्या है? आपको क्या इंस्टॉल करना है अपने सर्वर पर? जावा इंस्टॉल करना है। तो ये एक परफेक्ट ट्यूटोरियल है। सबसे पहले मैं अपना ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट कर देता हूँ। एपीटी अपडेट, सुडो एपीटी अपडेट। सो मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है ना? अब मैं जावा वर्जन पहले चेक कर लूँ जावा है कि नहीं है, तो ये बता रहा है जावा है ही नहीं। अब ये जावा नहीं है तो ये आपको बता रहा है कि आप यहाँ से जावा इंस्टॉल कर सकते हो। आपको जावा के बहुत सारे वर्जन हैं। अगर यहाँ पर आप लिखोगे जावा आपको कौन सा इंस्टॉल करना है, तो जावा चेंज लॉग आप लिखिए। जावा चेंज लॉग जो है, उस कमांड से आपको जावा चेंज लॉग पर आप जाएंगे तो लगभग जावा ने आज दिन तक कितने वर्जन लॉन्च किए हैं उसकी सारी हिस्ट्री आपको पता चल जाएगी।
ठीक है ना। तो ऑलमोस्ट डिफरेंट डिफरेंट जावा के वर्जन अवेलेबल है, जैसे जावा 21, जावा 20, जावा 19, जावा 18, जावा 17। तो जावा का कौन सा वर्जन आपको इंस्टॉल करना है ये भी आपको पता करना होगा। इस ट्यूटोरियल के लिए मैं जावा इंस्टॉल कर लेता हूँ। 21 इंस्टॉल करके देखते हैं, ये कमांड दी हुई है यहाँ पर, और मैं यहाँ पर देख लेता हूँ। सो यहाँ पर GRE आप इंस्टॉल कर सकते हैं, sudo apt install default GRE java runtime environment. So I will install the java runtime environment. पता होना चाहिए आपको, फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए कि JRE का फुल फॉर्म क्या होता है। व्हाट इज फुल फॉर्म, व्हाट इज JRE फुल फॉर्म। सो JRE का फुल फॉर्म क्या हो गया, बेसिकली जावा रन टाइम इन्वायरमेंट। तो मैं क्या इंस्टॉल कर रहा हूँ, जावा रन टाइम इन्वायरमेंट। समझ में आ रहा है ना, आई एम गोइंग टू इंस्टॉल जावा रन टाइम इन्वायरमेंट। बाय दिस आई विल बी एबल टू get the environment of Java. So if I type Java dash version, I will be able to get the Java version. So Java dash dash version, देखो जावा का कौन सा वर्जन आ गया, 11 वर्जन आ गया है। तो देखते हैं, ls ने शेल किया, ओकेलिप्स डॉट जार फाइल है। अब यहाँ पर आप पीपीटी में आ जाना, यहाँ पर पीपीटी में, और यहाँ पर हम पीपीटी में आए, और पीपीटी के अंदर आके बेसिकली मैंने एक शीट दे रखी है। यहाँ पर पर्टिकुलर ये फाइल है, इस एग्जाम्पल को आपको रन करना है। ये एग्जाम्पल को रन करना है, यहाँ पर आपको अपनी ईमेल एड्रेस डालनी है। यहाँ पर आप अपना नेम भी डाल सकते हैं, अपनी कंपनी का नेम भी डाल सकते हैं, और यहाँ पर आपको अपना सीरियल नंबर प्रोवाइड करना होगा, जो कि इस इंस्टॉलेशन प्रोसेस जैसे ही आगे बढ़ेगी आपको ये इंस्टॉलेशन के अंदर दिखेगा। सो मैं देख लेता हूँ एक बार, ये चल नहीं रहा है। हो सकता है मेरा कंटेनर बंद हो गया हो, तो मैं एक और टर्मिनल यहाँ से ले लेता हूँ, और देखते हैं कंटेनर बंद तो नहीं हो गया कहीं। कंटेनर नहीं बंद हुआ, अभी भी अप एंड रनिंग है। तो ऐसा करते हैं, इसको रीस्टार्ट कर लेते हैं, डॉकर रीस्टार्ट, एंड आई विल रीस्टार्ट दी जीरा कंटेनर। रीस्टार्ट हो रहा है। अब यहाँ से मैं डॉकर ps-a किया मैंने, 3 सेकंड से चल रहा है। अगेन मैं इसको 10,000 पे रन करके देखूंगा, और यहाँ पर हम देखते हैं ये जीरा फोल्डर इसका बन गया ऑलमोस्ट, वॉल्यूम माउंटिंग का। आप चाहें तो ये वॉल्यूम माउंटिंग हटा भी सकते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है, सेकंड टाइम ये चल गया। यस, थोड़ा सा टाइम लगता है। हाँ, बहुत हैवी एप्लीकेशन है, थोड़ा टाइम लगता है, तो देखते हैं। अब ये सारे मैं इस तरीके से इंस्टॉल कर रहा हूँ, मुझे HTTPS और डोमेन के साथ चाहिए, हर चीज मुझे HTTPS डोमेन के साथ चाहिए। यूं नहीं है कि मैंने क्लास में सिर्फ इतना बता दिया तो वही आप भी इतना बता रहे हो। आपको तो डे फर्स्ट से जितना सिखा रखा है वो सारी चीजें इंप्लीमेंट करके देनी है। एनजिनिक्स सर्वर का मैंने नहीं बताया अभी, एनजिनिक्स का भी बता देंगे। हाँ, कोई दिक्कत नहीं। वेब सर्वर आप चाहें एनजिनिक्स यूज करो, टॉमकेट यूज कर सकते हो, यू कैन यूज अपाचे। एज फार एज माय comfortability level is concerned, I am very much comfortable in Apache, and Apache can do everything which Nginx can. Nginx support reverse proxy, and Apache also do support reverse proxy, so everything is supported in both of the systems. So yes, Jira is a product of which company? Atlassian. Atlassian. So it has many products, like if I have posted in the WhatsApp group, Atlassian, Crucible, Crowd, Fisheye, Bitbucket. Bitbucket is a software. Bitbucket is an application where you can store your source code. Just like GitHub, you have a GitHub. GitHub is a website which is used to store source code. Similarly, if you, because GitHub is owned by Microsoft,
Every code you are uploading, whether the repository is private or public, whatever you are uploading, it is hosted on GitHub. And if it is hosted on GitHub, it means the Microsoft, the Bill Gates can read your source code. So many companies who are very much concerned about their private code, many time it is required by the companies that they will host their own SCM center, source code management server. So in that case, we use Bitbucket. So Bitbucket is just like GitHub, but you can own the Bitbucket, but you can't own the GitHub because GitHub is owned by Microsoft. So many big companies store their source code on the Bitbucket. So Bamboo is also like Jenkins CI/CD pipeline. If you want to create CI/CD pipeline, then you can use open source Jenkins, or you can use Bamboo, which is closed source. You need, because every Atlassian product is a paid software. You cannot use it for free. You have to pay it. Even though I am installing Jira, I cannot install Jira on my server unless and until I don't have a license key. Okay, in order to get the license key, you have to pay to the Atlassian. Okay, now set up your application name, title. So obviously, because this will be your private data, all your team members, your day-to-day assignment you are assigning to your team will be in the private mode. So most preferred mode would be the private mode. So click on the next part, and here we got the server ID. This is the most important section of this lecture. Once you got the license key, just copy the license key and go to the another terminal where we are waiting to type the serial number. I will type the serial number over here. Make sure that you type the serial number and try enter. Now I got the license key. I just copy the license key and paste over here, and I click on the next part. So this says that unable to confirm Jira license. I will restart the container. I will restart the container. Maybe uh, I need to stop some kind of services in Jira. I'm forgetting what the service name is. And after that, I can paste the code and I can continue the licensing process. I can continue with the license process. I need to load this agent, this OKLabs agent. I need to load this agent within this container boot time. So once the Jira container boots up, I need to load somewhere this agent file, oclabs.zar file. I need to load it at the boot time. So
These are some command and instructions. So you can put the command like this. Catalina options. So yes, I need to send this file, Oclipse jar file inside the container, and I'll export this. I will restart the Confluence server, and then I can I can check for the agent whether it is attached or not. Okay, so let's copy this uh, jar file inside the Jira container. So let me copy. Let's first of all do the ls-l and find out uh, docker ps-8. So the Jira container is this. I want to transfer this file. So in the PPT part, you will find docker cp. So there is a section called copy a file from host to a running container. Now in the interview, many times it is asked how you can copy a file from host to a running container. So the command is docker cp. Docker cp means docker copy source container colon target. So what I will do, I will use this command docker cp and the name of the file, because source is oklabs.zar, and I want to copy inside the container, the target container. So the target container would be until 28 September, whatever the name of this, colon, and the target location, colon, and the target location would be the root level of the container. So you can see the file is copied successfully. If I jump into the container and I'll show you where the file is copied, if I jump into the container and I'll show you. So if now I'm inside the container, if I do ls-al here, you will be able to see the OKLabs. Let me find out where I am right now. I'm inside this particular var Atlassian application Jira, whatever. If I do cd slash, then I do ls-l, and I'll be able to find oklabs.zar file inside the container. I'm inside the container, and this is the location of oklabs.zar file. So what I have to do right now, I'll export this command and I'll put it inside the in this section. And the path of the file is what? It's oklabs.zar file. At the root level, I have the oklabs.zar file. I'll export it. I'll export it. How you can export? Don't don't try to forget the quotation mark here. Uh, just copy this command and try to export this constant inside the container. I'll do ls. I'll clear the logs. Export Catalina options. This all Catalina services are related with Java programming language. We don't have to deep dive into the Java stuff. Just try to copy the file, the command, export, the constant name is equal to the variable name. Now the constant is exported successfully. What I'll do right now, I'll echo dollar and the name of the constant. The name of the constant. So let's see this is available or not. Yes, the system is echoing out and displaying the agent file, Java agent. Now what I have to do, uh, we need to, we can also export
Yes, either we can export or we can find the start confluence dot shell file, and we can manually type this option. So let's find where this particular file is. So I was in cd pwd cd pwd, and the location was var jira, cd var jira ls-al. Here I will find a file called startconfluence.sh. Let's find where is the file. uh, I must find a file called, so no worries, let's jump out from the container, start the container one more time, docker ps dash a. Let's restart this container, docker ps dash a, and docker restart the jira container. Let's restart the jira container. Yes, it is successfully started. Now I also have to investigate. Let's give this command to the chat and investigate what needs to be done. What needs to be done. So let's apply this thing, and let me see whether the Jira container is running or not. Hostname dash I, and let's see the Jira container is working at our side or not. So let me start the entire process one more time. Now uh, how can I check the agent is loaded or not? So to verify the agent has been loaded, you can do steps, confluence logs. I'm using Jira. I am using Jira. I'm not using Confluence. I'm not using Confluence. I'm using Atlassian Jira. I'm not using Atlassian Confluence. I'm using Atlassian Jira. So it is showing that this is the command catalina.out. So go inside the container, go inside the container. Yes, I am inside the container, and tell f catalina.out, catalina.out. Let's investigate this file. Uh, Using JSP command. Let's see if we have the JSP or not. Yes, we have the JSP. We have the JSP command, and give this to chat. Chat will automatically investigate whether the agent is loaded or not. Now it is giving another option in the bash rc or .bash profile. So how can I load? Because right now I am inside the container at the root level. I'll go to the cd pwd, and you see a tilde comma here. If I do ls-al, I will have a bash rc file. I have a bash rc file. So if you are using set env method, typically ensure that I'll say that I have the bash rc file. I'll use the second response. How to set in, how to set in bash rc file. So it is showing that open the file with nano vim. Maybe I install the apt install nano, apt install nano,
Nano is not available, so let's go and open the Vim, and we need to open the bash rc file. Vim is not there. We can use vi command. Vi is also not there. Apt install Vim. Again it is not there, so I need to update the system. If package is not getting installed, it means that you have to update the system and upgrade it. Apt install upgrade. Upgrade. Now install apt install Vim. Yes. We'll open the bash rc file dot bash rc file with the help of Vim. Now add the this particular variable at the end of the bash rc file. So I have to go at the end of the bash rc file, at the last line of the bash rc file, and I'll paste. I I will paste this instruction, uncomment the file, uncomment it, and the path is at the root level. Path is at the root level. Oklabs.jar file. I'll save, and also save and exit, and just reload the bash rc file with the source bash rc. Just reload and start Jira and stop Jira. So instead of starting and stopping Jira, what I will do, I'll exit from this container, do ls-l and docker ps-a. I'll just restart the container. If you are inside the container, you can use these particular commands, but I like to start and stop the container from the host. So docker restart. Let me use this container name docker restart. Just restart the docker container, and yes, let's do a docker ps-a. Now the container is up and running. So let's start and start the entire process, whole process one more time. Now possibly the agent is successfully loaded at the boot time of the Jira server. It is a very heavy application, so it might take few time to load. Now you can see that the container is running, but still the application is not up and running. Yeah. After 10 to 15 seconds, the application will load and boot. Now possibly we can able to put the license key and we can go ahead. Now at the second terminal,
second terminal, what I can do, I can use that command. I'll go to the PPT and I'll copy the command, this entire command. I'll paste it and I'll just remove the serial number of the server ID, and now I will get a different server ID. This time I'll get the different server ID. Every time you are bootstrapping the Jira application, it will generate, it possibly may generate unique server IDs. By looking at the URL, you might see URL like JSP. So it is stand for Java Server Pages. JSP stand for Java Server Pages. So you can say, yes, sir, Atlassian Jira is built using Java programming language. Java programming language. The objective of this class is to, get understanding of how to install Atlassian Jira on your own server. You get the original license from the actual website, and then you can install on the production server. So for example, I'm working on a project called OK Labs, and I'll click on the next part, and this time I got the server ID. I think this ID is unique this time. So I'll type, this will generate a new key, and let's see whether I'm able to go ahead or not. This time also it is not working because the agent is not loaded correctly. So you have to investigate. We have to load this agent at the boot time, and then this agent will restrict the or bypass the authentication, the license authentication system used by Jira. So maybe in the next class I'll be able to show you, or one of you student can give a try. The main hint for this assignment is to load this agent with different options available, like you can export, you can load in the bash rc file. These are the ways. You can also set env.sh file. There are many ways by which you can load this agent at the boot time of the Jira server. Any doubts so far? एनी डाउट सो फार? आप में से किसी को भी कोई समस्या है तो आप पूछ सकते हैं अभी। कल संडे है, आप ट्राई करना इसको इम्प्लीमेंट करने का, और ये वाला भी लिंक मैं आपको दे देता हूँ ताकि आपको थोड़ा हेल्प मिल जाएगा इससे। ये इसी पीपीटी के अंदर मैं दे देता हूँ यहाँ पर। सो हिंट भी मैंने बता दिया है कि आपको एजेंट को बूट टाइम पर लोड करना है, उसको रन टाइम पर, देन वो हो जाएगा। मैंने किया है, मैंने 1000 बार किया है, आप भी ट्राई करना। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, गुड इवनिंग, हैप्पी वीकेंड।